Hello, my dear students. In this class, we are starting very important topic, which is reflection of light. Right? So have a look at syllabus. The syllabus says that define and use the term normal, angle of incidence, and angle of reflection. Right? When we will draw a ray diagram, तब हम ये angles को हम देखेंगे. Describe an experiment to illustrate law of reflection. Describe an experiment to find the position and characteristic of optical image formed by a plane mirror. That it has same size, object size or image size same होता है, same distance from the mirror, the image is virtual image. And the last point states that state for reflection angle of incidence is equal to angle of reflection, and use this in construction, measurement and calculation of an image, right? So starting off with how you will represent light. But your light is represented by a ray of light. Now what is ray of light? You can say अगर आपने unidirectional light को single directional light को represent करना है, you will represent that light with the help of ray. Right? Now how do you draw a ray? You just draw a single line and you draw an arrow. Right? So this shows that light is traveling in one direction. Right? So this is called ray of light. What could be an example of ray of light? A simple laser light could be an example of ray of light because laser light travels in one direction. So how the converging beam or diverging beam of light is represented? Now what is beam? Multiple rays will make a beam of light. So there are three types of beam of light. So you are writing beam of light. The first type of beam of light is parallel beam. The other one is converging beam. And the last type of beam is called as diverging beam of light. Right? Now drawing the parallel. बच्चों बड़ा सिंपल सा है. पैरेलल का मतलब है सारी की सारी जो रेज हैं they are parallel to each other. So this is parallel beam of light. So there are three parallel lines. You can draw 4, 5 as many lines. और आप इनके ऊपर arrow जरूर draw करेंगे. So this is showing a parallel beam of light. Now converging beam of light. एक शरारत जो हमने भी की हुई है आप भी कर सकते हैं. Take a magnifying glass and try to focus the sunlight on a piece of paper या on a piece of leaf. आप उसके ऊपर लाइट को कन्वर्ज करके उसके फोकल पॉइंट पे लाइट को फोकस करके आप उसको आग लगा सकते हैं, बिकॉज सनलाइट की जब लाइट एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी तो इट विल बी इनफ एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट पेपर कैन इजीली कैच फायर. सो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट का मतलब ये है कि सारी की सारी लाइट एक सिंगल पॉइंट पर रीच आउट कर रही है, एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है. हाउ यू विल ड्रॉ इट? Like this. Now very important thing is what will be the direction of arrows ताकि आप इसको converging beam of light show करें. It seems that all of the light is being converged at this yellow spot ना, ठीक है? So the direction of arrows will be toward this point. So all the light is being converged at this single point. Moving on, the next beam of light is diverging beam of light. So basically diverging beam of light is like this, that light is generated from a single point and now it is spreading out in all the directions. What could be the example of diverging beam of light? Your light bulb is an example of diverging beam of light. ठीक है, हम क्लासेस में प्रोजेक्टर यूज करते हैं. प्रोजेक्टर में से भी प्रोजेक्टर के बल्ब से, प्रोजेक्टर के सोर्स से लाइट डाइवर्ज हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है और वो स्क्रीन के ऊपर जाते जाते उसकी बीम लार्ज हो जाती है बिकॉज दैट लाइट इज डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट. राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वंस अगेन यू आर पुटिंग एरोज ऑन ऑल द रेज. ये एरो ही तो लाइट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है? नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बट जो रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ reflecting surface. In case of reflection of light, it could be simply a surface of
मिरर, ठीक है। नाउ व्हाट इज मिरर? बच्चों मिरर तो एक ऐसी चीज है जिसको हम डेली लाइफ में हर रोज यूज करते हैं, राइट। आप अपना फेस देखने के लिए मिरर यूज करते हैं। इसके अलावा जब आप शू शॉप पे जाए शू ट्राई करने के लिए, यू लुक योर शूज इन द मिरर। आप जब ट्राई रूम में जाते हैं, ड्रेस जो होता है अपना ट्राई करते हैं, उसको मिरर में देखते हैं। सो बेसिकली आप मिरर को कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं। हाउ मिरर इज कंस्ट्रक्टेड? मिरर इज कंस्ट्रक्टेड just by taking a glass. This is simply a glass, transparent glass, and one side of this glass is being polished by a metal. ठीक है, इसकी एक साइड को आप मेटल से पॉलिश कर देते हैं। So basically this is the polished side. इस साइड पर आप कोटिंग कर देते हैं। किस चीज की कोटिंग कर देते हैं? This could be either silver metal or it could be aluminium. So silver is the best reflector of light. Up to 99% of light is being reflected by silver, और almost 90% से ज़्यादा लाइट तो एल्यूमिनियम भी रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, अगर हम उसकी बैक साइड देखें तो हमें मेटल नहीं नज़र आता है, कलर नज़र आता है। बच्चों उस मेटल की लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कलर करते हैं। सो ग्लास, फिर सिल्वर की लेयर, और फिर पेंट टू प्रोटेक्ट दैट मेटल लेयर, मेटालिक लेयर, ताकि वो रिमूव ना हो जाए। सो दिस टॉप सरफेस इज प्लेइंग द रोल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो जब आप मिरर को इंस्टॉल करेंगे अपने रूम में, तो जो कोटिंग वाली साइड होगी, जिस साइड पे आपने सिल्वर की कोटिंग की हुई है, वो मिरर की बैक साइड होगी, और जो फ्रंट साइड होगी, uncoated side होगी, that will act as a reflecting surface, right? So let's see what is reflection. आप लोग लिख रहे हैं, शाबाश, reflection of light. Reflection of light. So reflection of light is bouncing back of light rays from a reflecting surface, for example mirror। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन वी विल राइट द डेफिनेशंस। वंस अगेन मैं आपके सामने एक मिरर ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज ग्लास, और इसको एक साइड से आपने पॉलिश किया हुआ है। सो विच सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस? दिस टॉप साइड ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स, ठीक है। देयर इज अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर, एंड दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। This is a line. This dotted line which is making an angle of 90 degree with this reflecting surface, this line is called a normal. ठीक है? This line is called a normal. Now what will happen is a light ray will come. एक light ray आएगी, ठीक है, जो मिरर की तरफ आ रही है। It is coming towards mirror. It will hit the surface of this mirror, and this is an angle which is referred as angle of incidence. So basically this ray is coming towards the mirror now, so this ray is called incident ray. This ray is called incident ray. So what is angle of incidence? Angle of incidence is angle between this incident ray and the normal. Right? Angle of incidence is angle between the incident ray and the normal. याद रखिए, this is not angle of incidence. मिरर की सरफेस को रेफरेंस नहीं लेना। For angle of incidence, the reference line is normal. Right? Now, this point, जिस पॉइंट पर आके लाइट हिट कर रही है और यहां से लाइट में बाउंस बैक होना है, this point is called point of
incidence, point of incidence. Now from this point the light will bounce back at the same angle जिस angle से वो incident रही थी, ठीक है. So light will bounce back once again with the same angle. मैंने वो angle 45 draw किया था, so angle of reflection will be also 45 degrees, ठीक है. So this is the reflected ray. Arrow जरूर लगाएंगे. We will label this as reflected ray. Now point out angle of reflection. Angle of reflection is angle between the reflected ray and this normal, right? So यहाँ पे आप लोग angle label करेंगे. This angle is angle of reflection, ठीक है. So याद रखेंगे, there is a major rule of reflection that in reflection angle of incidence is always equal to angle of reflection. लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन कर देते हैं, देन वी विल राइट अबाउट दीज. आप लोग लिख रहे हैं शाबाश. नॉर्मल. सो दिस नॉर्मल लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन. इमेजिनरी लाइन perpendicular to the surface of mirror. Perpendicular to the surface of mirror. Now we will write angle of incidence. Angle of incidence. So angle of incidence is angle between, it is an angle between, as I just told you, angle between incident ray and normal. Angle between the incident ray and the normal. And what is the second angle? The second angle is angle of reflection. Angle of reflection. So angle of reflection is angle between the reflected ray, angle between the reflected ray and normal, ठीक है. तो बच्चों दिस इज द बेसिक सेटअप जो आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत है कि एक इंसिडेंट रे आई है, वो सरफेस ऑफ ग्लास को हिट करती है, सरफेस ऑफ मिरर को हिट करती है इनफैक्ट, और बाउंस बैक कर देती है. दिस इज कॉल्ड सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. एक नोट लिखेंगे, दिस इज इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट नोट. इन रिफ्लेक्शन angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection, right? So मैंने इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 45 डिग्री सेट किया. एज यू कैन सी ऑन माई रूलर दिस एंगल इज 45 डिग्रीज. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू angle of reflection, and in this particular case both of them are equal to 45 degrees, right? So these are basic terminologies related to reflection. जरा आगे देखें शाबाश. Moving on, we have to define certain points, certain new terminologies. So first of them is type of images. One of the type of image is a real image. Now what is real image? Real image is the image that can be caught on screen. For example, जो प्रोजेक्टर का इमेज होता है, प्रोजेक्टर की लाइट जब प्रोजेक्ट करते हैं, द इमेज कैन बी कॉट ऑन अ स्क्रीन ऑफ प्रोजेक्टर. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी दिस, ठीक है. सो सच इमेज दैट कैन बी कॉट ऑन स्क्रीन. सो रियल इमेज इज एन
image that can be caught on screen. ठीक है, और याद रखिएगा जब भी इमेज की फॉर्मेशन होगी, हम लेंस के केस में स्पेशली देखेंगे, 2 या 3 रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पर आकर फिजिकली इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट के ऊपर रियल इमेज फॉर्म होगा. ठीक है, एंड द अदर टाइप ऑफ इमेज विच इज इन फैक्ट द इमेज फॉर्म ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज. ठीक है, वर्चुअल इमेज इज एन इमेज that can not be caught on screen. That cannot be caught on screen. For example, now what is screen? Students confuse होते हैं, screen का क्या होता है? Screen का टीवी की स्क्रीन की बात हो रही है? नहीं, just a plain white surface. It can be a page, it can be a screen of your प्रोजेक्टर, इट कैन बी अ व्हाइट बोर्ड, इट कैन बी अ वॉल. ठीक है, प्रोजेक्टर का इमेज जो है इन सब के ऊपर कैच हो सकता है. बट व्हाट इफ यू होल्ड अ व्हाइट पेज एंड यू ट्राई टू फोकस योर रिफ्लेक्शन ऑन दैट पेज फ्रॉम द मिरर. आपकी लाइट मिरर की तरफ गई, मिरर से बाउंस बैक होकर वापस आई, एंड यू आर ट्राइंग टू कैच दैट लाइट ऑन द screen that you are holding in your hand, that is simply a page. आप कभी भी अपना इमेज उसके ऊपर कैच नहीं कर सकते. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसकी रेज फिजिकली इंटरसेक्ट नहीं करती, इस वजह से वो इमेज कैच नहीं होता. सो द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय reflection is virtual image. The image formed by reflection is virtual image. ठीक है, so we will try to see कि how the simple reflection works. देखिए शाबाश, मैं दोबारा से मिरर कंस्ट्रक्ट करूंगा. So basically this line is representing a mirror. इसको सेंटर में ड्रॉ कर लेते हैं. This line is representing a mirror. ठीक है, and basically this is a reflecting surface. So what is at the back of this mirror? but जो back of the mirror पे कोटिंग हुई होगी, सो दिस इज द कोटेड साइड, जिसकी साइड को आपने वॉल की तरफ कर देना है. दिस हैज़ नो इम्पॉर्टेंस बिकॉज लाइट ने इस सरफेस से बाउंस बैक नहीं होना. अच्छा बच्चों, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन इज लाइट की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, लाइट आई और लाइट की डायरेक्शन रिवर्स हुई, लाइट का मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो लाइट की वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, लाइट की फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, लाइट की वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी. V equals f lambda is formula of velocity of light, as we have seen this formula in waves. So ना velocity change होगी, ना frequency change होगी, ना wavelength change होगी. Why? Because medium change नहीं हुआ, सिर्फ light की direction change हुई है. So the only single thing that is changed is the direction of light, right? So if the object is placed at this point, this red dot is representing an object. This red dot is representing an object. ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को आपने इस व्यू पॉइंट से ऑब्जर्व करना है. ठीक है, दिस इज अ पोजीशन ऑफ आई, ऑफ एन आई. सो मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट और आईज के दरमियान में एक बैरियर है. हियर इज अ बैरियर. आप इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, but still you can see this object by the reflection from the mirror. So how this reflection will work? सबसे पहले आपको इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, इस मिरर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, and you know the name of this line. An imaginary line that is perpendicular to the reflecting surface. This line is called a normal. Right? So basically, the incident ray will go
from the object towards the mirror like this. The light is incident on the mirror like this. And what is angle of incidence in this case? See on the ruler, this angle of incidence is equal to 24 degrees. Okay? So don't forget to draw the arrow. This incident ray is coming from the object to the mirror. Now what will happen at this point of incidence? ये blue color का point of incidence, यहाँ से wave reflect back होगी और observer की eyes में enter होगी and image will be formed inside his eyes. ठीक है? That is another phenomena जिसको हम lens में देखेंगे. How the image is formed inside the eyes. Here we are drawing the reflected ray. So the angle of incidence was 24 degrees. So angle of reflection will be also 24 degrees. So here the light bounces back and enters the eye of observer. Okay? What will be the direction of this ray towards the eyes? And here is the angle of reflection. Angle of reflection is same as angle of incidence and this angle is equal to 24 degrees. Okay? But where the image of this object will be seen? बच्चों, the image of this object will be seen inside the mirror और उसका distance object distance के equal होगा, but that distance will be inside the mirror. So basically आपको इसी ray को inside the mirror dotted line से extend करना होता है, इतना extend करना होता है कि आप exactly object के सामने आ जाए. ठीक है, मैं explain करता हूँ. So image will be seen, image will be observed right at this point. This is the position of image. What will be the direction of arrow? Arrow की direction होगी from the image towards eye. तो ये दोनों arrows एक दूसरे को complement कर रहे हैं. तो बेसिकली समझे जरा इस बात को. Reflection is visual illusion. ठीक है, जंगल में गए, एक मोंकी के सामने आपने एक मिरर रख दिया और उसको रिकॉर्ड किया, वो परेशान हो जाता है. उसने कभी मिरर देखा ही नहीं, जंगल में मिरर नहीं था. ठीक है, why? Because he is facing that optical illusion for the first time. हमारे लिए एक नॉर्म है, हम डेली मिरर देख रहे हैं, कार में बैठते हैं, कार का रेयर व्यू मिरर देखते हैं, कार का साइड मिरर देखते हैं. ठीक है, हमारे लिए इट्स अ नॉर्मल, बट otherwise it is not a normal. Basically you have to understand कि ये visual illusion है. कैसे visual illusion है? Basically light is coming from the object, it is bounced back and it is entering the eyes of the observer. लेकिन हम physically इस bouncing back of light को detect नहीं कर सकते. हमारे आई में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डिटेक्ट करे कि ये लाइट स्ट्रेट आई है या टर्न होके आई है. तो हमारे आईज को इल्यूजन मिलती है कि ये इमेज से इनसाइड द मिरर से लाइट जनरेट हुई है और ये स्ट्रेट ही आई है और आपकी आईज के अंदर एंटर हुई. ऐसा नहीं है, असल में लाइट बाउंस बैक हो गया है. राइट? सो इमेज विल बी फॉर्म्ड राइट इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये है, अगर आप ऑब्जेक्ट को और इमेज को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, this straight line will always cut the mirror at an angle of 90 degrees. ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के दरमियान हर्डल भी है तो स्टिल ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देख सकता है, बट उसको देखेगा इनसाइड द मिरर, बिकॉज रे डायरेक्ट नहीं आएंगी बल्कि यहां से रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर की आईज में एंटर हो जाएंगी. राइट? एंड दिस इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन डू. Now, what happens in the reflection is when you stand in front of mirror, जैसे जैसे आप मिरर के पास जाते हैं वैसे वैसे आपका इमेज भी आपके पास जाता है. That is just your reflection. ठीक है, और अगर आप मिरर से दूर जाएंगे तो आपका इमेज भी मिरर से दूर चला जाएगा. इसका मतलब ये है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. This is always equal to the image distance. This is image distance. So keep this thing in your mind that object distance
is always equal to the image distance. Object distance is equal to image distance, राइट? अगर ये ऑब्जेक्ट दूर होगा तो इमेज डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट करीब होगा तो इमेज डिस्टेंस भी कम हो जाएगा. सो बच्चों, these are the main things of reflection. This is the main theme of reflection. हमने इस वक्त जो रे डायग्राम ड्रॉ किया, दिस इज बेसिकली अ सिंगल रे डायग्राम. लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए एटलीस्ट 2 रे डायग्राम को देखना होगा, जो कि इसी वीडियो के सीक्वेंस की नेक्स्ट वीडियो है, इसका पार्ट 2 है, राइट? सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट. Stay tuned for the next video. This is it for today's class. Thank you.